अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम मिलेंगे मिसेस सना जंग से, जिन्होंने 7 दिन की वाटर फास्टिंग की। वाटर फास्टिंग का मतलब ये है कि वो कुछ खा नहीं रही थी, सिर्फ पानी पी रही थी, नमक वाला पानी और चंद कहवे पी रही थी। वाटर फास्टिंग के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी फ़ायदे हैं। तो आइए मिलते हैं मिसेस सना जंग से और देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। So my name is Sana and I'm a teacher. I have 3 children. मेरे तीनों बच्चे cesarean हुए हैं and I'm 36 years old and मैं 80 kgs. तो I wanted to lose weight और इस चीज़ की वजह से I'm at my work right now और मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है and I hope कोई disturb ना करे हमें. अच्छा, so I introduced myself. I'm a very normal house working lady and this is how I teach in the morning and at afternoon I go home, I do my normal जो घर का काम होता है. तो बेसिकली वाटर फास्टिंग आपने की क्यों? आपका मोटिव क्या था कि वाटर फास्टिंग की जाए? I wanted to go on a water fast because I wanted to lose weight quick, like easy, okay? So that's why I went for a water fast and I thought it was very easy because I did not need to think about food. Like सुबह में आई यूज़ टू थिंक कि मुझे नाश्ते में क्या करना है, मुझे आफ्टरनून में क्या खाना है, घर जाके क्या खाना है, रास्ते से सैलड लेना है. सो द फर्स्ट थिंग जो मेरी ज़िंदगी आसान हुई वाटर फास्ट की वजह से, आई न्यू कि बस अभी कुछ नहीं खाना, बस पानी पियो, ग्रीन टी पियो, कॉफ़ी पियो एंड यूर गुड, यूर सेट. ओके, फर्स्ट मोटिवेशन ऑफ कोर्स टू लूज सम वेट एंड दैट वाज क्विक. And another motivation, I'm on this group ये जो हमारा लो कार्ड का है माशाल्लाह, and Dr. Asma, she had been, you know, she keeps on telling us good stuff about water fasting. And then जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे अपने अंदर से जो उन्होंने कहा था बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, so I was very much motivated कि the bad cells they die, so I wanted to kill them. Okay. And the other thing, I wanted to take a challenge. I want to challenge myself कि क्या मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. And alhamdulillah I did it. It was not that difficult, believe me. Okay. तो यानी आपको डर नहीं लगा कि आपको 7 दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा? I had a doctor behind my back. Okay, I did not do anything with myself. I had Dr. Asma with me. And whenever I was stuck somewhere, I used to give her a call. I used to message her that when I had these bags, I used to take a picture and send it to her. और कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, I used to discuss it with her. So I would have never taken this risk अगर डॉक्टर अस्मा मेरे साथ नहीं होती. She really helped me a lot, alhamdulillah, and this group really kept me motivated. And one more thing, I saw her video जिसमें वो बता रही थी कि वाटर फास्टिंग के कितने फ़ायदे और कितने बेनिफिट्स होते हैं. And there she narrated a story about the Prophet and the Sahabas that for many days they were hungry and भूखे पेट उन्होंने खंदक खोली थी. And how did they get this energy? They got it from ketosis. At that time हमें तो नहीं पता होगा ना कि ketosis है, but it was through ketosis, I think, because I also stayed hungry and I was quite active and I had lot of power. I was normal. Okay. कुछ अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं, सुबह से शाम क्या करते हैं? was very normal. I woke up in the morning. मैंने अपना डे स्टार्ट किया अपनी चाय से, वो ग्रीन टी से. एंड देन फिर मैं अपने स्कूल आई. मैंने स्कूल आके कॉफ़ी पी, पानी बहुत पिया, सॉल्ट वाटर रखा और अपना पढ़ाया. 2 बजे तक यहाँ से फ़ारिग हुई. फिर अपने बच्चों के साथ उनके कामों में लगी. शाम में ट्यूशन दी. इसका मियाँ घर आया, फिर खाना वाना लगा, फिर वॉक की. इट वॉज परफेक्टली नॉर्मल. मैंने कुछ भी ये नहीं किया कि मैं that I'm sleeping in the afternoon. Yes, one thing which I did, I tried to sleep early, which was also for 2-3 days because my husband was not liking it कि मैं 8:30 सोने की कोशिश कर रही हूँ. So I was awake then again 10:30. Usually for like 2 days I slept at 8:30. Okay. कमज़ोरी कितनी हुई है आपको वाटर फास्टिंग में? Now the first day was a bit tough because of course my body was getting adjusted. The first day was a bit tough, but the second day I was okay and the third, fourth day were very easy.
I did not feel weak at all. I was not thinking on those lines that I'm weak and I'm bichari, that I'm not eating. I was not thinking like that. I was looking at the good part, that the benefits of it. Okay, now I'll come to the benefits of the water fast. Number one, weight loss. Okay, number two, this is something so important. I was having a lot of hair fall, like a lot of hair fall. I don't know, alhamdulillah, it stopped my hair fall. Believe me, my hair is not falling now. This 1 week which I did, I don't know what happened, but it had stopped. Okay, and my skin right now, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये it's mosquito bite, मुझे रात में हुआ है, but my skin has become better. This is not because of the water fast, okay? And I have become more active, no doubt about it. I feel good from inside. I feel happier from inside. Okay? तो आप उन लोगों को क्या कहेंगी जो कहते हैं कि वाटर फास्टिंग जो एक टॉर्चर है और ये है कि ये तो इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकई आपके लिए टॉर्चर था? Okay. Now, I did not torture my body at all. I was perfectly fine. And मैंने मतलब जो मेरा तरीका है अपना जिक्र करना, अपना I was doing it. Okay, it was not that I have stopped something कि मैं दीन से दूर हो गई या कुछ हो गया. I was perfectly fine, and I don't think so that I tortured my body. I think मेरा posture भी straight हुआ. I do feel कि जब I feel good. I don't know what to say on this, if it is against Islam, because I'm not a scholar or anything, but I feel good. I think if I feel good, so I think Allah also feels good. Okay, so I would just like to say that I did not torture my body. I was very happy. I was my husband, my sister-in-law, she was so happy to see me, and she told me, so you're so motivated. The day I had to break my fast, I told her that I think I can do it for 5 more days. So she was so happy. She's like, you're so motivated, Sana, but not now. Abhi khol lo, then you do it. Okay. तो बाकी सबको आप कोई टिप्स देना चाहेंगी इस तरह फास्टिंग के बारे में? Just बहुत ज़्यादा दुआ. Yeah, this is a tip. I pray so much. I pray a lot that Allah help me lose weight, and believe me, Allah has helped me. I was quite fat. I was like quite fat, and then very slowly, I reduced weight. And और tips जैसे मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली, ग्रीन टी ले ली, लेमन पानी ले लिया, यखनी मैंने ली 2 टाइम दिन में, यखनी मैंने ली. और what kind of dua? Okay, like all kind of dua, like Allah Ta'ala please help me lose weight, Allah Ta'ala please make my skin glow, Allah Ta'ala put your noor on my face, these kind of duas. Okay, and Allah Ta'ala help me, Allah Ta'ala make me strong. तो बेसिकली आप बाकी सबको क्या कहेंगी जो कि इस किस्म की फास्टिंग से बहुत डरते हैं कि उनको कुछ हो जाएगा, उनको क्या कहेंगी? I would let you know that I'm a food lover. Okay, I love food. Okay, I really love food. Okay, I'm married to a Punjabi family, and they are food lovers, and I love food as well. And this was not difficult, because when you see the results and you see yourself, you feel healthy. It's not you need to do this for the entire year or something. For some days you need to quit for your betterment, okay? So the ones who are afraid of fasting, believe me, कुछ नहीं होगा. Try it. हिम्मत करें, ज़रूर आपकी मदद होगी. But go slow. Like I started with 16 hours fasting, and then I did 18 hours fasting, and then I did 20, then I went to 24. The day I touched 24, I was on the group that I've done 24. What should I do? Should I open it, or should I do it more? And the Dr. Asma said that do it for 5 days. So for her it was like, okay, do it for 5 days. So it's so easy, it's so cool, okay? So I tried it, and alhamdulillah, it was worth it. Inshallah, I'm going to make my husband also do it. I'm going to make my sister also try it soon, maybe after Ramzan. और inshallah, I hope कि मैं किसी काम आऊँ आप लोगों के, and I hope मैंने
सही तरीके से आपको जवाब दिया हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। एंड वन दुआ टू हैव अ गुड बॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी। ओ अल्लाह ग्रांट गुडनेस टू माई बॉडी। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी। ओ अल्लाह ग्रांट गुडनेस टू माई बॉडी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। दिस वाज रियली फन। थैंक यू। तो ये थी मिसेस सना जंग। आपने देखा कि इनको वाटर फास्टिंग से ना सिर्फ वेट लॉस के बेनिफिट्स हुए बल्कि और हेल्थ बेनिफिट्स भी हुए। अगर आपने ट्राई करना है तो बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर के सुपरविजन में वाटर फास्टिंग करें। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।